Hello students, welcome back. Now we are going to discuss in this video the second part of modern living. Okay, now let's start. Now this is text C, text A and text B I have already discussed in modern living part 1, and in this modern living part 2 video I am going to discuss text C titled New Superstitions for Old. Okay, now सुपरस्टिशंस क्या है? जनरल वे में अगर हम बात करें सुपरस्टिशंस क्या है, दीज आर ओल्ड बिलीव्स और थॉट्स. ट्रेडिशनल बिलीव्स हो, कंजर्वेटिव बिलीव्स हो, आपका फैमिली का कुछ पर्सनल बिलीव्स हो, या फिर कम्युनिटी बिलीव्स हो, विच वी यूजुअली कॉल इट अ थिंग ऑफ द पास्ट. मतलब पहले से है, उस तरीके को हम बोलते हैं superstitions. I'm talking in a very general way. Okay. However modern a man becomes, he still believes in some kind of old belief or superstition. जैसे कि आपका आई डोंट नो दिस वेरी क्लियरली बट आई हैव ऑफन सीन पीपल जब वो कुछ अच्छा बोलते हैं या फिर वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, तो फिर वो बोलते हैं टच वुड, राइट? आई थिंक मेरी एक दोस्त है एंड शी यूज्ड टू से इंशाल्लाह आफ्टर एवरी स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, शी यूज्ड टू से द वर्ड ओके, दैट इज गॉड विलिंग, सब सही होगा, राइट? मेनी बिलीव इन लकी और अनलकी डेज. हमारे घर में तो बिलीव करते हैं कि अगर कोई शुभ काम करना हो तो मंडेज को शुभ करो या फिर थर्सडेज को करो, तब जाके काम अच्छा होगा, राइट? नंबर्स, तुम्हारे जन्मदिन, इफ यू आर बोर्न ऑन 3rd जनवरी, तो 3 तारीख में आप कोई भी काम करो वो काम अच्छा ही होगा. इस तरीके का कुछ बिलीव्स होते हैं. ओके, although practically speaking everyone agrees that things have a cause and effect relationships, just like Newton's law that कुछ भी काम करो उसका एक्शन रिएक्शन होता है, राइट? तो हम जानते हैं एक्शन रिएक्शन होता है. वी रियली नो, I mean the practical part of our mind knows about it, but still somehow we still believe in superstitions. We still believe in lucky and unlucky things. Okay. Now, superstitions are often associated with faith and do not have any logical explanation. When things cannot be proved, then people accept it unquestionably as a matter of faith. मतलब सपोज कुछ होता है, ठीक है, इन द सेंस कि एक सपोज अ कैट क्रॉस्ड योर पाथ, और हम क्या बोलते हैं, अच्छा बिल्ली गया. लाइक I'll tell you a personal thing. I was riding my scooty with my auntie at the back, and suddenly a normal cat, okay, it's not even a black cat, just a normal cat, it crossed our path. My auntie said stop the scooty, okay, and I stopped it. I stopped, and then we waited. she said take 2 or 3 steps back. So I had to, was scooty ko I had to pull it back, and then I again restarted the scooty and we left. ठीक है, तो इस तरीके का कुछ होता है ब्लाइंड बिलीफ, सुपरस्टिशंस, जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है. कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस चीज का कि गाड़ी रोको, फिर गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लो, फिर चालू करो, कुछ एक्सप्लेनेशन है इसका? लॉजिक कुछ भी नहीं है. बट पीपल फॉलो. क्यों? क्योंकि है, बस करते आए हैं, बस इट्स अ मैटर ऑफ फेथ. उस तरीके को हम बोल देते हैं. वी जस्ट ब्रश इट ऑफ कि हाँ हाँ ऐसे सब करते हैं तो हमें भी करना चाहिए. ओके. Now, superstitions are often associated with old world and primitiveness and a derogatory term for the modern man. अब अगर एलॉन मस्क को तुम पूछोगे that do you believe in superstition, वो क्या बोलेगा? Probably he'll say that no, I don't believe in all these things. That's something that the savage man used to follow. That's something that the early man used to follow. That's something that the ancient people used to follow. I am a modern man. I am the developer of Tesla. I am the owner of Twitter, etc., etc. I don't believe in all this superstition stuff. Right? Modern man, modern thinking. Okay. And in similar cases, things are often accepted as acts of magic which comes along with suspension of our disbelief. Sometimes अगर कुछ हो जाता है, सही हो जाता है, superstitions होता है, and we follow it, और कुछ सही हो जाता है, we feel as if कुछ magic हुआ है, right? हम बोलते हैं हाँ हाँ
just because we followed the rules, that is why this magic happened. Okay. Every occurrence evokes an old age belief. Salt spills and the person throws a pinch over his left shoulder. A knife falls to the floor and the saying goes, knife falls, gentleman calls. Right. जो हमारे जो there is a song also in Odia, when your left eye, the eyelid, your left eyelid, when it flutters, and suddenly someone in your family, if he or she notices that, then he'll be like, oh, someone is coming. We'll having a guest. Okay. या फिर वो जो कौवा है, if he crows all of a sudden nearby your door, front door, then your mom will be like, oh, someone will be coming. We'll be receiving a guest soon. तो यही सब चीज है. Okay. Walking around instead of under the ladder, ये सारे कुछ तरीके के superstitions है that has been provided in your text. Quickly closing an umbrella that one has opened inside a house. मतलब घर के अंदर you are not supposed to open the umbrella. Only outside the house you will open the umbrella. Okay. Now, children often get to hear sayings that they don't understand and hence associate it with magic. Okay. मतलब ये एक है another superstition कि वो जो नींबू मिर्ची लगाते हैं ना in front of your door or in front of your car and then after 7 days or some days you discard it. तो हमारे हिंदुइज्म में है कि जब नींबू मिर्ची आप देखोगे रास्ते में गिरा होगा, do not step on that. Okay, do not step on that either by foot or with your vehicle. Don't do that. क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि नींबू मिर्ची they kind of absorb all the negative energy and when you step on it, that negative energy transfers into your body. ठीक है, तो इस चीज को अगर हम किसी ग्रोन अप को बोले, he or she may not follow it, लेकिन यही चीज को अगर हम किसी बच्चे को बोले, then that बच्चा is going to follow it. Why? क्योंकि उस बच्चे को लगेगा हाँ ये सच में हो रहा है, सच में there is magic in that नींबू मिर्ची. Okay. Now, like wishing on the first star, looking at the new moon over the right shoulder, avoiding cracks on the way to school, wishing on white horses, on loads of hay, on coppered bridges, on red cars. Wishing मतलब जब भी रेड कार देखो इमीडिएटली एक विश मांग लेना, जब भी पहला तारा देखो या टूटता तारा देखो इमीडिएटली एक विश मांग लेना. यही सब बच्चे सुन सुन के बड़े होते हैं और वो खुद करते भी हैं. They follow this thing. Okay. Now, the question arises in accordance to primitive people whether they have any religion or is it all superstition. The fight for establishment is not between magical world and scientific, but between the superstitions of the civilized people of the society and the childish views of the primitive people. तो हम जो superstitions की बात करते हैं, there is a debate going on in the background. Okay, and उस debate में competitors कौन है? It's not about the magical world and the scientific world. मैजिक और साइंस के बीच compete नहीं हो रहा है, compete हो रहा है between the civilized people and the primitive people. कि civilized people जो superstitions को follow करते हैं, ना करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, versus the superstitions that our aunts, our grand aunts और our community follows. Okay, उन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है, उन दोनों के बीच डिबेट चल रहा है, व्हाट टू फॉलो व्हाट नॉट टू फॉलो, व्हाई टू फॉलो व्हाई नॉट टू फॉलो. ओके, सिविलाइज्ड जो फॉलो कर रहे हैं, सिविलाइज्ड बोल रहे हैं हम जो फॉलो कर रहे हैं ये सही है, प्रिमिटिव वाले लोग मूर्ख थे, गधे थे, उनका कुछ दे वर अनएजुकेटेड. तो लेट्स नॉट जस्ट थिंक अबाउट देम, हम जो फॉलो कर रहे हैं, जितना फॉलो कर रहे हैं, हाँ वो सही है. ओके, तो यही बात, यही डिस्कशन चल रहा है. Now, there are contrasting views of urban and poor believers of superstitions. The traditions of the poor believers are often dismissed as just superstition by the urban and sophisticated believers. Again, ये जो superstitions है, superstitions के आधार पर दो categories divide हो रहे हैं. एक जो कि let's say skyscrapers में रह रहे हैं, आपके bungalows में रह रहे हैं, buildings में रह रहे हैं. एक जो कि middle class है और lower middle class है. तो उन दोनों के कैटेगरी में वो दो कैटेगरी ऑल्सो फॉलोज डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस. हमारे स्काई स्क्रैपर वाले बोलेंगे कि ये लोग, ये जो लोअर मिडिल क्लास है, उनका जो सुपरस्टिशन है दैट इज जस्ट सुपरस्टिशन, मतलब मायने ही नहीं रखता, यू कैन डिस्कार्ड इट.
लेकिन हम जो सुपरस्टिशन फॉलो करते हैं, हमारा जो बिलीफ है, वो सबके ऊपर लागू होना चाहिए. Everyone should follow and respect our superstitions. Okay, our beliefs, our thoughts. Okay, now superstitions have always been associated with the past, but the interesting thing is even modern man of modern age believes in those superstitions and even at times creates new ones himself. मतलब, the writer is saying that हम superstitions को we associate it with the past. कि हम बोलते हैं ये अर्ली मैन के जमाने का सुपरस्टिशंस है, हम बोलते हैं ये राम के जमाने का सुपरस्टिशंस है, हम बोलते हैं ये 100 साल पुराना बिलीफ है, आजकल ये नहीं चलता. लेकिन व्हाट मैन अनकॉन्शियसली डज इज, जैसा टाइम प्रोग्रेस करता है, जैसे वो खुद इवॉल्व करके प्रोग्रेस करता है, सिमिलरली वो सुपरस्टिशंस को एक नया कपड़ा चढ़ाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ही माउल्ड्स एंड converts those superstitions into something new. Okay, it's like putting an old wine into a new bottle. ये करता है, या फिर वो खुद unconsciously नया नया superstitions create करता जाता है, and he is not even aware of that. जैसे कि 1930s में बोलते थे, now don't run out into the sun or polio will get you. In America, in the early 1900s, there was, rapid spread of polio. Okay, polio development एक चैप्टर है which you guys will read in your second year CHSE students. तो early 1900s में there was rapid spread of polio. Everyone was literally getting affected by polio or dying out because of polio. And वो क्या बोल रहे थे, इसका cause क्या था? Because you are playing under the sun, that is why you are getting affected by polio. ठीक है, right? Okay. Now, since Indian society adores fair skin and dense hair, so cosmetic companies use that strategy to sell fairness creams and hair growth lotions. अब आपके सुपरस्टिशंस, आप जो सुपरस्टिशंस फॉलो करोगे, जैसे कि काली लड़की की शादी नहीं हो सकती, जिस लड़के के सर पे बाल नहीं है, वो लड़का शादी नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह. दीज काइंड ऑफ स्टफ, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये इंडियन साइकी में पहले से मौजूद है. अब उस चीज को हवा देके व्हाट दीज कॉस्मेटिक कंपनीज आर डूइंग, दे आर ब्रिंगिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स, इलॉजिकल बिलीव्स को हवा दे रहे हैं कौन? कॉस्मेटिक कंपनीज. Wear green while you appear your exams or leave the back door while going on a journey. ये सब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, ये सब हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, and we also kind of follow it sometimes. Why we follow it? Because it provides us assurance that yes, things will go our way if we follow such instructions. Okay. जैसे कि गुड़ खा के जाना तो एग्जाम अच्छा रहेगा, दही शक्कर खा के जाना एग्जाम अच्छा रहेगा. अब दही शक्कर से तुम्हारे एग्जाम का क्या लेना देना है? Is there any connection? No, but we still do it. Our mothers still feed us dahi shakkar before we leave the house for our exams. क्यों? एक है, it kind of gives us power, inside assurance कि हाँ आज एग्जाम अच्छा जाएगा, भले ही तुम पढ़ो या ना पढ़ो एग्जाम के लिए, दही शक्कर खा लो तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. That is what you think. Okay. Now why do we follow such instructions, or why do we believe in these superstitions? It's because it's our subconscious that we want to assure that something might go wrong in future which can be prevented by certain actions of the present. That is, agar future में there is a possibility of things going wrong, then present में अगर हम कुछ actions follow कर ले, हम कुछ beliefs, कुछ इस तरीके का remedies कर ले, तो हमारा future का जो negative हो सकता है वो नहीं होगा. एग्जाम अगर खराब होना है, हमें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम खराब जाएगा, लेकिन हम घर से निकलेंगे दही शक्कर खा के, तो हो सकता है हमारा एग्जाम बच जाएगा. Getting my point? And again we stick to these instructions if we want an event to take place in a positive way desperately. Okay. For example, it's a bad omen if a black cat crosses one's path. In Egypt,
दे वर्शिप कैट्स, ओके। और सर्टन कल्चर्स में ब्लैक कैट्स लकी सिंबल माना जाता है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में, हिंदुइज्म में, ब्लैक कैट्स को एसोसिएट किया जाता है विथ नेगेटिविटी। एंड दैट इज वाई आप देखे होंगे आपके टीवी सीरियल्स में, जो हॉरर मूवीज, हॉरर सीरियल्स में ब्लैक कैट को दिखाते हैं एज अ सिंबल ऑफ इविल। तो इफ अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ, आप जो भी काम करने निकलोगे वो काम नहीं हो सकता। अगर काम करने से पहले यू स्नीज, तो यू नीड टू स्टॉप फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद रिज्यूम योर वर्क। इमीडिएटली स्नीज करने के बाद इफ यू स्टार्ट वर्किंग, आपका काम नहीं हो सकता। दीज आर द बिलीव्स, ओके। नाउ, what are transitional objects? How can you explain superstitions with respect to transitional objects? Okay. Now we have seen children while sleeping that try to hold a toy. हम टेडी बियर को पकड़ के सोएंगे, हम बारबी को पकड़ के सोएंगे, है कि नहीं? अब साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो टेडी बियर है, ये जो बारबी है, these are transitional objects. ट्रांजिशन, okay? मतलब एक चीज से दूसरी चीज पे जाना, ट्रांजिशन करना। एंड ये ऑब्जेक्ट्स कर क्या रहे हैं? These help the kids to oscillate between two zones, one being the realities of everyday life and the other being the land of dreams. Okay, तो ये चीज उनको, according to the psychologist, ये चीज बच्चों को help करता है to stay somewhere in between the land of reality and the land of dreams. Okay, to oscillate, ना ही वो complete reality में रहते हैं, ना ही वो complete dream land में रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। oscillate, have you seen the pendulum clock? जैसे वो oscillate करता है, similarly the child oscillates, okay, during the time of sleep. Now superstitions are like these objects. So writer is saying superstitions are also like transitional objects. They help man oscillate between the past and the present, between the time when things were accepted unquestioningly and the time when things are examined scientifically. Before the development of science, हम बोलते थे this is the rule of the God, this is the law of God, और कोई क्वेश्चन नहीं करता था। But after Darwin, after Newton, उनका advent जब हुआ into the field of science, into the field of literature, whatever it is, people started to question. People started to question the religion. People started to question the rule of the God, the law of the God. Okay, तो superstitions क्या करते हैं? They help the man oscillate between the zone the zone where you don't question and the zone where you begin to question. Okay. It is not charms but medicines that cure. We know that if someone is suffering from, suppose किसी को बुखार है, high fever है, we know कि उसका टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, whatever, और वायरल फीवर या कोविड कुछ भी डिटेक्ट होगा, and then he will be given medicines. We know that medicines will cure, but still हम सोचते हैं कि अगर कुछ लाल मिर्च को जला के उसके चारों तरफ घुमा ले, उस इंसान के चारों तरफ घुमा ले, तो नजर उतार जाएगा एंड ही विल बी ऑल राइट। अगर उस इंसान को हम मंदिर ले जाए या पीर बाबा के पास ले जाए तो नजर उतर जाएगा एंड देन ही विल बी ऑल राइट। वी स्टिल बिलीव इन दैट, राइट? Okay, with time, however, we see the advancement of knowledge and how science is improving our everyday thoughts. With time, with evolution of man, there is also evolution in terms of knowledge. And science is improving day by day. Okay, now, in order to accept and practice this newfound knowledge, we must discard superstitions and challenge the theory behind creation of new beliefs. So, writer is saying, अब वक्त आ गया है that we should discard the superstitions. We should challenge the theory behind these superstitions. And we need to ask questions कि क्यों अगर बिल्ली क्रॉस करना, अगर बिल्ली हमारा पाथ क्रॉस कर ले, why should we stop? Why do you think it's a bad omen? क्यों? Okay. Now, how are these new superstitions generated? Be it the old or the new superstitions, they are generated because of our fears, wishes, and feeling of helplessness in dire situations.
It is a fear that makes us believe in certain superstitions. It is a wish fulfillment, wish fulfillment, wishes, जो भी है, modern terms हम बोले तो manifestations, that makes us believe in superstitions. It is because we kind of feel helpless in certain situations, which makes us believe in superstitions. Now, can we actually eliminate superstitions? The so-called civilized world is in the grasp of superstitions, and our surroundings are ideas of science, sacredness and secular pattern thrive. मतलब इंसान जो है अभी, modern man, a man cannot say that he is not a believer of superstitions, or he doesn't follow any kind of such practice. Okay, superstitions enable us to have a tiny world of our own. Superstitions ना बहुत मजाकिया होते हैं, अगर हम बोले तो एकदम मैजिकल होते हैं. ठीक है, we associate magic with everything. Black cat crosses our path, we ask question why, but again we think कि is it really, क्या सच में वो evil है? What will happen if I actually go ahead and do that work, even if that cat has crossed my path? What if I actually go ahead and do my path? देखेंगे, let's see, काम करेगा या नहीं. You see this kind of curiosity, this kind of magic. Superstitions kind of develop that kind of curiosity in us, that kind of magic in us. And before going to the exam, even though you are well prepared, for your exam, अगर तुम कोई green कपड़ा पहन लो, green रुमाल अपने पास रख लो, ओके, या फिर बोलते हैं कि सौंफ और वो इलायची, उसको चबा के जाने से एग्जाम अच्छा होता है. अगर वो खा के जाओ, निकलते हो एग्जाम के लिए, यू काइंड ऑफ get this assurance that all is well, right? Three Idiots में all is well, उस तरीके का assurance मिलता है. We summon luck with a rhyme. हम सोचते हैं, जैसे कि हम बिलीव करते हैं, आज भी हम बिलीव करते हैं, lot of people believe in witches, lot of people believe in charms, lot of people believe in spells, lot of people believe in manifestations, lot of people believe in a lot of strategies, a lot of experiments to manifest money, to manifest whatever in your life. ये मैनिफेस्टेशन हम करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा, उसको फॉलो करेंगे तो ये मिल जाएगा. ये सब क्या है? ये क्या है? कुछ नहीं, ये सब सुपरस्टिशंस है. Okay, and these superstitions, they kind of impact our life in lending a bit of magic into our life. जब हो जाता है ना, हम बोलते हैं मिरेकल. जब हो जाता है हम बोलते हैं मैजिक. जब हो जाता है काम, हम बोलते हैं लकी. ओके ओके, चलो, हो गया. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक this video, do subscribe to my channel. Thank you.